शिल्पा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं हूँ इस अमेजिंग ईद मेकअप लुक में। ये है ग्लोई एंड ड्यूई मेकअप लुक, जो कि मैंने स्पेशली आने वाली ईद के लिए किया है। अगर आप लोगों को ड्रेसअप होना है फॉर अ पार्टी और ओकेजन ऑन ईद, तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने लुक कैसे क्रिएट किया। तो फर्स्ट आई fill in my brows with Fashion Bro Crimp Pencil. That's one of my favorite. Now I'm gonna take my Fit Me concealer to conceal my eyes, ताकि मेकअप जब आई मेकअप करे तो वो मिक्स ना हो एंड अच्छे से क्रिएट हो। सो कंसीलर के सेट होने के बाद आई विल यूज दी ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम मिस्टीन एंड इसको मैं अपनी आईज के ऊपर यूज करूंगी टू सेट अप दी कंसीलर। एंड ऑफ कोर्स इससे आप जब आई मेकअप करेंगे तो क्रीज लाइंस भी क्रिएट नहीं होंगी। सो आई शैडो के लिए फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस शेड। So I'll try to create a crease line for myself because thoda, I have hooded eyes, so crease line create karna is very important. It's a beautiful coral shade. एक illusion create करेंगे and then after creating a crease line, I will smudge it with this fluffy brush, so कोई harsh lines ना आए। So after creating this transition color, I will add more dimension to this eye color by adding a little bit of copper gold on my crease line, just to separate the color. Now I will be using this golden shade on my eyelid, on the center of my eye. So फेस को मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज करके रखा है एंड फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग माई वेट एंड वाइल्ड photofocus primer and this is my favorite one. So I'll take a bit. I'll be using the L'Oreal Infallible 24 Hours Foundation and I'll also mix my facial oil with it to give a dewy look. एक dewy look आएगा अगर मैं अपना facial oil और foundation को mix करके लगाऊंगी। So चलिए, so I'll take a pump. And उसमें I will mix the facial oil. ज़्यादा नहीं करना है because ज़्यादा भी करेंगे तो it will be very oily. So yes, now I'll mix this one. And I'll start applying it. And so guys, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग ड्यूई लुक आया है। कैन यू सी द ग्लो? द ग्लो इज अमेजिंग। फेशियल ऑयल और फाउंडेशन को मिक्स करके जो आपको ग्लो मिला है, इट्स वेरी अमेजिंग। दैट ड्यूई लुक इज देयर ऑन योर फेस, so it's looking really great. So for concealer, I'm using again the Fit Me concealer in the shade Sand, and I
apply it here. Now for baking, I'm using again the Mistine 24 hours powder, translucent powder, and I'll apply it here. We'll apply it here as well. So जब तक ये settle in होगा, I'll do my eye makeup, which is the eyeliner and the kajal. So for lining my eyes, I'm using my favorite product, which is gel eyeliner, L'Oreal gel eyeliner. So this is very promising, guys, क्योंकि ये बिल्कुल भी smudge नहीं होता है and it's very last long. I'm using it for quite some time, I would say. एक विंग आप क्रिएट कर सकते हैं एंड ड्रैग दैट विंग बिलो एज वेल. सो गाइज, जो ट्रांजिशन में मैंने ये वाला कलर यूज किया था, दैट विल आई यूज टू लाइन माई आईज. अब जो बेकिंग मैंने की थी वो सेटल इन हो गई है, सो अब मैं उसे डस्ट ऑफ करूंगी ताकि आई विल मूव ऑन टू द कॉन्टोरिंग स्टेप. So guys, for contouring, I'm using the Wet n Wild Mega Glow Contour Stick, and it's an amazing stick, guys. इसका जो shade है, Oxon U is the darkest shade, but it's not that dark. But yes, we can work out. If you don't like the heavy contouring, then this is one for you. If you like heavy contouring, then ये आपके लिए नहीं है. So let's start, guys. So guys, for blush, I'm using the Wet n Wild Ombre Blush, and it's a very beautiful blush and very natural and doesn't look artificial. So I'll just tap on the pink one, and now it's time for mascara. So for mascara, I'm using the Maybelline Hyper Curl Lashes. So yes, guys, I like this a lot. And so guys, I'll finish off this makeup look with my lipstick, which is the Nykaa lipstick in the shade Kudi, which is my favorite lipstick these days, and it's a beautiful color. So lipstick अब dry होगी and it's looking really good. This is my favorite shade, guys. So guys, this is the complete look, and I hope आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है. And if you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. And I'll keep posting you guys with such wonderful videos. तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए bye bye.